仲がいいのね。ええ、意外だわ。まさかあなたに女友達がいたなんて。私たちって友達なの？そうね。私たちは友達だわ。生徒会室に用事があったのを思い出しただけよ。Ihr zwei scheint ja echt dicke zu sein. Ja, kann man wohl sagen. Wer hätte gedacht, dass du mit einem Mädchen befreundet sein kannst? Hm? Was ist denn? Wie bitte? Wir beide sind miteinander befreundet? Doch, klar. Natürlich sind wir Freunde. Mir ist eingefallen, dass ich noch was für die Schülervertretung erledigen muss. Seems you're quite close. Yes, very much so. I never imagined that any girl would want to be friends with you. What is it? I didn't realize that you considered us friends. No, you're right. We are friends. I remembered something I had to do at the student council office. Se llevan muy bien, ¿no? Sí, la verdad, sí. No pensé que ninguna chica de la escuela quisiera ser tu amiga. ¿De qué hablas? ¿Quieres decir que tú y yo somos amigos? Claro que sí. Por supuesto que somos amigos. Recordé que tengo algunas tareas que hacer en la sala del consejo. Vocês são próximos? Na verdade, eu tô sim. É que nunca passou pela minha cabeça que você tivesse alguma amiga. O que foi? Mas peraí, nós dois somos amigos? Você tá certo, nós somos amigos sim. E eu me lembrei que tem uma coisa pra fazer na sala do conselho. तो तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। हाँ, हैरानी तो होगी। तुम्हारी फ्रेंड कोई लड़की हो सकती है, ये बात हजम नहीं हुई। हकला क्यों रहे हो? एक सेकंड रुको। क्या हम फ्रेंड्स हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने सही कहा, हम फ्रेंड्स हैं। मुझे अभी अभी कुछ याद आया। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में मुझे एक काम है। நீங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ க்ளோஸா? உண்மையிலேயே ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. உன் கூட பொண்ணுங்கெல்லாம் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல. என்னாச்சு? நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்றேன். ஒன்றும் இல்லை. நீ சொல்றது சரிதான். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ ఆఫీస్లో కొంచెం వేల ఇருக்கு. అది ఇప్పதான் జ్ఞాపకం వందదా. మీరిద్దరూ క్లోజ్ అన్నమాట. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఏ అమ్మాయినా నీకు ఫ్రెండ్గా ఉండాలనుకుంటుంది అనుకోలేదు. ఏంటి? ఒక్క నిమిషం ఆగు. మనిద్దరం ఫ్రెండ్సా? అలా అని కాదు. యూఆర్ రైట్, మనిద్దరం ఫ్రెండ్సే. స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ ఆఫీస్లో నాకు కొంచెం పనుంది, అది ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది.